हेलो सर। या बोलो बेटा। सर मुझे वो कल के इसमें डाउट था। या विल डिस्कस। Good morning, sir. या गुड मॉर्निंग। सो काइनेमैटिक्स का होमवर्क स्टार्ट किया क्या? Yes, sir. Sir, I have a doubt in level 1 classwork, 8th one. लेवल 1 क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 8. ओके, so take that question number 8. It is given that a bullet traveling horizontally loses 1/20th of its velocity while piercing a wooden plank. Then the number of such planks required to stop the bullet is. So question का मीनिंग है a bullet traveling horizontally loses 1/20th of its velocity. To assume that this bullet was initially moving with a velocity that is equal to u. Now it is passing through a plank or a wooden block of thickness. You can just assume that its thickness is equal to t. Okay, or so that it loses 1/20th of its velocity. So when it is coming out of this one, its velocity is going to be, what will be its velocity when it is coming out? 2 minus 1 upon 20 u. Yeah. So its velocity is not going to be u by 20. U by 20 kam ho gaya. So its velocity is going to be u minus u divided by 20. So its velocity is going to be 19 u divided by 20. Got it? So our aim is to find out what about the like number of planks that we should put in such a way that its velocity becomes equal to 0. So assume that its velocity becomes equal to 0 if we are putting n such number of planks. Means if it is traveling a distance, अगर हमने 2 plank put करेगा तो 2t distance travel करेगा. अगर ऐसा n number of planks put करेगा तो n into t distance travel करेगा. So we can take, now it is traveling a distance that is equal to nt. So here we'll assume that the retardation produced by the first plank or retardation produced in this situation is going to be same, because each and every plank is going to provide the same resistance force. So acceleration will be same. Now we can compare these two situations. So in the first situation, initial velocity you should take it as u. Final velocity you should take it as 19 u divided by 20. And distance you can take it as nothing but t. Acceleration you can take it as minus a because it is retardation. In second situation, we can take initial velocity is equal to u, and final velocity we can take it as 0, and this distance travel we can take it as n into t. Acceleration we can take it as minus a. Any doubt regarding this? ये समझ में आया क्या लिखा है? Yes, sir. Okay. Sir, Now s is equal to 2 क्यों लिया? t क्यों लिया? s is equal to t. distance travel is equal to the thickness t. अच्छा thickness है वो. Okay. हाँ thickness है, मतलब distance travel को हमने t consider किया. Okay. Now we can write the relation between them. Now आप सोचना है कि what equation we should use. We are having 3 equations या 4 equations. S is equal to ut plus half at square. V is equal to u plus at. V square minus u square is equal to 2s. Sir, बोलो बेटा. sir, how you got a is equals to minus a? Because it is deceleration or retardation. But the acceleration of the bullet is not equal to the retardation which is caused by the log of wood. Acceleration of bullet ऐसा नहीं है कि when the bullet is moving through this plank or this wooden block is going to exert some resistance force, right?
Yes. And because of that, this bullet is having some acceleration in the opposite direction. Yes. So But which it is nothing is but not retardation. equal, na? Not equal, matlab not equal to what? Not equal to means I mean to say that the acceleration of bullet is not equal to the retardation, na? Means it is stopping only 1/20 speed. I mean velocity. Now that speed is decreasing. पहले speed का value u था, वो अभी 19/20 हो गया because of this deceleration. Yes. So we should take it as nothing but it's we don't know what about the value of deceleration. We'll just assume that it is a. Okay. Okay. समझ में आया? Is it Yes, sir. clear या still you are having doubt? We No, don't sir. know what about the value of we know that. अब हमको इतना तो पता है कि वो deceleration हो रहा है. We don't know what about the value of deceleration. I just assume that deceleration as a. तो Okay. अब जिसका मैग्नीट्यूड को मैंने a कंसीडर किया, but deceleration हो रहा है. That's why I'm not writing plus है. I'm writing minus sign. Okay. Okay. Now we have to identify which equation we should use. बोलो कौन सा equation use करना है? V square minus U square is equal to 2A. Yeah, we can go for that equation. V square minus U square is equal to 2A. Now we can solve. Like first case में it is 19U by 20 का square minus U square is equal to 2 into minus A into T. Equation number 1. Now in second situation, we'll write it is 0 square minus U square is equal to minus 2 into A into N into T. Equation number 2. Now while solving these two equations, we can find out what about the value of this T over there. Sorry, N over there. Then पता चलेगा कि how much number of plank is required. Solve करके देखो क्या मिल रहा है आंसर. और अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ लें. सर इस बार एग्जाम में जो है सर वो पहले का आने वाले ना? एग्जाम में वो क्यूमुलेटिव करके आएगा, मतलब जो भी पुराना टॉपिक है सब आएगा. ऐसा एक एक टॉपिक जैसा नहीं आता है. Not only in the coming test, आगे भी ऐसा ऐड करके आएगा. तो आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट में आएगा. फिर क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो. इक्वेशन नंबर 2/1 कर दो या 1/2 कर दो, तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा. देखो क्या मिल रहा है आंसर. If I'm going for equation number 2 by equation number 1, what we'll get it is 400 upon 13. तो ये जो 280 है और minus 280 है वो दो कैंसिल हो जाएगा. We can write this n is equal to nothing but 400 divided by 39. 39. तो उसका वैल्यू क्या आएगा, अराउंड 10.25 के आसपास आएगा. ओके, तो उसका मतलब है कि 10 से ज्यादा होना चाहिए तो आंसर विल बी 11. समझा? हम लोग एक एक प्लैंक रखता है, तो 10 रखे तो रस पे नहीं आएगा, 11 रखे तो रस पे आएगा. तो द नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड शुड बी इक्वल टू 11. बोलो बेटा. सर इस केस में तो मतलब
एयर रेजिस्टेंस भी तो काम कर रहेगा ना फिर। नहीं नहीं, एयर रेजिस्टेंस का कुछ नहीं है, वो उसके अंदर से प्लैंक्स वुड के अंदर से पास कर रहा है तो वुड का ही होगा और कुछ नहीं। Sir, level 1 classwork 6. लेवल 1 क्लास सर वर्क एक मिनट वो 6। कॉपी कर। हाँ ठीक है, करो। दिख रहा है क्या कि एक एक करके बड़ा करना है? सर थोड़ा सा पहले ए पार्ट लिखा। हाँ ए पार्ट लिखने के बाद बता दो, मैं दूसरा करूँ। सर लिख दिया। लिख दिया। लिखिए। फिर हमने इसको सॉल्व किया है, फिर वो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया। काम भी नहीं है। तो 10.25 आएगा। 10.25 को 11 लिखना पड़ेगा बिकॉज हम लोग 10 रखे तो नहीं होगा, 11 होगा। अगर 12.3 आ गया तो आंसर 13 होगा, ऐसा। और कौन सा बोला था? लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 6 बोला ना? सर 6. 8B। Okay. It is given that a body moves with a velocity 3 meter per second due east and then turns due north and travels with the same velocity. The total time travel is 6 seconds. The acceleration of body is. तो over here हमने बोला था कि acceleration find out करना है, तो we should go for v minus u divided by t, but it is not just magnitude of v by magnitude of u. It should be v vector minus u vector divided by t करना पड़ेगा। समझ बात? So we should go for vector subtraction. So acceleration is not just v minus u, it is v vector minus u vector by t. The body moves with a velocity 3 meter per second due east. So आप ऐसा सोचो कि अगर हमने x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके लिख रहा है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट एंड ये हो गया वेस्ट। A body moves with a velocity 3 meter due east. So 3 meter per second due east है, उसको मैंने 3 I cap से representation कर रहा हूँ। Is it okay? Like while I am assuming this is towards right as nothing but x axis. And due north with a speed of and then due north with a speed of with the same velocity, which is 3 meter per second, which is towards j cap. Okay. If total time interval is 6 seconds, the acceleration of body is. So you can write this acceleration is equal to final velocity is 3 j cap minus initial velocity is 3 I cap divided by time. Time is nothing but 6. समझ में आया? Now if you'd like to find out the magnitude of this, so magnitude क्या रहेगा? Magnitude will be equal to nothing but we can take magnitude of this 3 j cap minus 3 3 I root cap 2 vector. upon 6. Yeah, root 2 this will upon be equal to 3 root 2 divided by 6. So we can write this will be equal to root 2 divided by 2, which we can take it as 1 divided by root 2. समझ में आया? तो इसका magnitude रहेगा 1 divided by root 2. And we need to find out the direction also. So we can go for 3 j cap vector minus 3 I cap vector. So 3 j cap मतलब A हो गया 3 j cap minus 3 I cap मतलब ये हो गया minus 3 I cap. So if you are adding these two vector, this is going to be a resultant vector. तो resultant vector का direction क्या रहेगा? ये हो गया north and ये हो गया west. So it will be around northwest. समझ में आया? Yes, sir. Sir, what is point object? Point object means the size of that object is negligible. मतलब we'll just consider it as like a just a point. मतलब ऐसा बड़ा object consider नहीं कर रहा, एक छोटा सा point जैसा consider कर रहा। उसका dimension सब लोग neglect कर रहे हैं, उसको point object बोलते हैं। समझ में? बोलो। The seventh question in the same column. लेवल 1 का सर 12th Yeah. also 9 और 11। Seventh also. Seventh one, it is given that if a body travels 30 meter in an interval of 2 seconds and 50 meter in next interval of 2 seconds, then the acceleration of body is.
body travels 30 meter in interval of 2 seconds and 50 meter in the next interval of 2 seconds, and the acceleration of bodies. So over here, assume that the particle is moving with a constant acceleration. Okay. And Rm is to so if a body travels 30 meter in an interval of 2 seconds, to assume that a particle is starting from here and this object is traveling a distance of 30 meter in an interval of 2 seconds. So when time is equal to 0 to time is equal to 2 seconds traveling 30 meter and 50 meter in next interval of 2 seconds. We next 2 seconds में मतलब when time का value 4 second हो गया, then it is traveling a distance of 50 meter. Then Rm is to find out the acceleration of body is. तो इसका a का value क्या है वो calculate करना है. So we don't know what about the value of its initial velocity. So assume that its initial velocity is u. So in the first situation, we know the things like initial velocity, we assume that is u. Distance, we took it as nothing but 30. And assume that its acceleration is a. Acceleration, we'll take it as nothing but a. And time, we can take it as nothing but 2 seconds. Here we go, first situation. Now in second situation, whenever we are using this equation, we can apply between any two intervals. So second situation के लिए, I'm just considering this is our initial point and this is our final point. So I can write it like this. Initial velocity is nothing but u. Displacement is 30 plus 50, which is 80 total. Got it? And acceleration is a. And time taken is 2 plus 2, that is 4. समझ में आया? Any doubt? Now we need to think which equation we should use. बोलो कौन सा equation use करना है? V is equal to u plus 80. No, हमको v का वैल्यू पता नहीं है ना. ut plus half Is equals to ut plus half S 80 is square. equals to S is equal to ut plus half 80. Half 80 square. Because we don't know the value of this v over here. तो अब दोनों केस में, दोनों फर्स्ट केस और सेकंड केस में इक्वेशन यूज करो. So if you are using S is equal to ut plus half 80 square. So S is going to be 30. Initial velocity we'll take it as u. Time we can take it as 2. Acceleration we can take it as a. T square we can take it as 4. Equation number 1. Then in second case, you can write it is going to be 80 is equal to u into 4 plus half into a into 16. Equation number 2. So two equations, two unknowns. So we can find out the value of this u and the value of a. And Rm is only to find out the value of a. So we can find out the value of a. Got it? Fine. Sir, बोलो बेटा. sir, we can do this method by a is equal to v minus u upon t. We don't know the value of v, no? सर हम लोग वो 30/2 और 50/2 कर सकते हैं ना. हाँ सर, v is equal to d. 30 by 30/2 और 50/2 के लिए, मतलब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी. Initial दिया नहीं है ना वहाँ. अरे 30 डिस्टेंस दिया है ना. ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्पीड नहीं दिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट दिया है. वही. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर सकते हैं ना सर. 30 डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम मैंने करें तो भी आपको ऐसे क्या ही किया. मिलेगा? यू विल गेट वेलोसिटी मिलेगा. इनिशियल और फिर फाइनल. ना बेटा, आप बात नहीं समझ रहा है. ओवर हियर द पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉट विद कांस्टेंट वेलोसिटी. मतलब अगर आप 30/2 करेगा आपको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा. यस सर. 15 इज इट? 15 क्या है? व्हाट इज दैट? 15 मीटर पर सेकंड. नहीं, 15 मीटर पर सेकंड क्या है? व्हाट इज दैट? वेलोसिटी. नो, किसका वेलोसिटी है? हाँ समझा सर. समझा? इट इज हाँ. नॉट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड. वो एक्सेलरेशन करके मूव कर रहा है. मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ था 10, हाँ फिर समझा 11 सर. हो गया, 12 हो गया, ऐसा करके करके करके
30 मीटर ट्रैवल किया, वो एक्सीलरेट करके मूव कर रहा है, इट इज नॉट मूविंग विद कांस्टेंट समझा। वेलोसिटी। यस सर, समझे। Sir, the answer is 5. या सर मैंने तो वैसे ही किया जैसे उसने बोला, मतलब मेरे को गलती से बराबर आ गया। आंसर तो बराबर ही आया पर Sir, हाँ, वो quadratic समझा पर। equation. Sorry, in two variables वाला equation से मेथड से करेंगे। या इक्वेशन से कर सकता है, इधर आप 2u का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है, डिपेंड्स आपको कौन सा मेथड सही लगता है। सर बोलो बेटा। लेवल 1 क्लास वर्क क्वेश्चन 11। सर 9 भी उसी में। Sir, can you explain this sum? इसका आगे का कैलकुलेशन का बात कर रहे हैं कि अभी का जो बात कर रहे नहीं सर, हैं? कैलकुलेशन का। या कैलकुलेशन तो अभी है, हमको क्या a फाइंड आउट करना है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस कि आप ये इसका जो वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता है, या मतलब वी कैन जस्ट राइट दिस इज 30 is equal to nothing but 2u प्लस ये हो गया nothing but 2a, है ना। नाउ इफ यू वांट, आप ये 2u का वैल्यू मतलब इंस्टेड ऑफ दिस 4u सब्स्टिट्यूट कर सकता है, या आप u का वैल्यू फाइंड आउट करके भी कर सकता है, डिपेंड्स सर आपको 2 कौन 2 सा कैंसिल मेथड कर अच्छा दो ना। लगा। हाँ, मतलब आपको कैसे भी करना है वैसे कर सकते हैं। तो इसका 15 माइनस a इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ u, राइट। तो आप ये u का वैल्यू इधर पुट कर दो, सो विल गेट द वैल्यू। हमने इक्वेशन को ऐसा लिख सकता है 80 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 80, और इसका भी आप थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, 4u प्लस ये हो जाएगा 8a, राइट। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो विल गेट अस 20 इज इक्वल टू u प्लस 2a हो जाएगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, फिर u का वैल्यू पुट कर दो। u का वैल्यू क्या था, 15 माइनस a था ना, तो 15 माइनस a प्लस 2a, so we can write as 20 minus 15 is equal to a, so which is equal to 5. So हमें बेटा got it? यस सर बोलो। मेरे को पूछना था कि आंसर कैसे आया v माइनस u अपॉन t से? वो मेरे को पता नहीं, वो ऐसा आंसर नहीं आ सकता बिकॉज इट इज नॉट v माइनस u बाई t, ऐसा मेथड से नहीं चल रहा वो। सर Just मैं moving with ट्राई। acceleration, ओके सर, मतलब गलती से कुछ आया होगा, बट ऐसा मतलब वो कंसेप्ट है ही नहीं है इधर। ओके सर वो सर। 8 थोड़ी ना सर, वो 3 आएगा ना क्या बेटा? सर, वो जो आपने लिखा है ना फर्स्ट स्टेटमेंट में 80 इज इक्वल्स टू 4u प्लस 8a, उसकी जगह 3a आएगा ना। नहीं भाई 80 is equal to बोलो 80 इज इक्वल्स टू u4 प्लस 3 आएगा ना सर ऊपर में। सर आपने 8 लिखा है। 3 क्यों आएगा? ये इसका बात कर रहा है, ये का हाँ सर। बेटा 16/2 किया ना, 16/2 8 है ना। सर इट वाज लुकिंग लाइक 3 6। नहीं वो 16 16 16 है, 4 का स्क्वायर है ना बेटा, t स्क्वायर 84 था ना, 4 का स्क्वायर 16। So question 9. It is given that Sn is equal to 2 plus 0.4 n. Find the velocity, find initial velocity and acceleration. तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, Sn मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन दी nth सेकंड। ओके, so we already know the relation for displacement in the nth second. तो displacement in nth second is nothing but, इसके लिए इक्वेशन है Sn is equal to u plus a into n minus half. So over here u plus a into n minus half का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, which is given that 2 plus 0.2 into 0.4 into n. Got it? तो फाइंड आउट करना है इसका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है। Got it?
So you can just compare these two equations. So u plus तो आप देखो कौन सा इक्वेशन में कौन सा ऑप्शन में वैल्यू पुट करें तो ये फॉर्मेट में आपको आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है. सर ऑप्शन ए. तो आप अगर u फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट में देखेगा u का वैल्यू अगर इफ यू आर पुटिंग इट एज 2.2 प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू 0.4 into n minus half. So we'll get us 2.2 plus 0.4 n minus 0.2. तो ये 2.2 minus 0.2 is going to be 2. 2 plus 0.4 n. तो ये फॉर्मेट में आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन सही है ऐसा. Sir, don't we have any other method to solve this question? नो आप इसको ऐसे एक एक सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा बिकॉज ओनली n का टर्म था. सर सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं हो रहा था. Because hit and trial won't be the only method to go with. तो हर बार कैसे मतलब? Over here we are having two terms. n का एक ही टर्म है तो आप ऐसा करने का जरूरत नहीं पड़ता है. बट n के अंदर n minus half का एक भी एक टर्म है तो आप एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा वरना अदरवाइज दे शुड गिव द वैल्यू ऑफ u और द वैल्यू ऑफ a. अगर दोनों नहीं दिया है like for solving because it's a thumb rule, like if you are having one equation one variable we can find out. If you are having two equations two variable we can find out. If you are having three variable three equations we can find out. Okay. But if you are having one equation two variable then we cannot find out. मतलब mathematically हम लोग उसको solve नहीं कर सकते. Then we'll go for this hit and trial method. Over here ये हो गया u is a variable, a is a variable and we are having only one equation. Okay. One equation two variable. तो आप method use करना पड़ेगा. ठीक है. और बोलो. Sir 11. Sir 10th question. Sir 12th भी. Sir 10th. Question number 10. The particle starts moving from rest under a uniform acceleration. It travels a distance x in the first 2 seconds and a distance y in the next 2 seconds. If y is equal to n times of x, then the value of n is. So in question it is given that a particle starts moving from rest. So assume that it is starting from rest so that its initial velocity is equal to 0. So its initial velocity 0 tha with uniform acceleration. So its acceleration is a constant. It travels a distance x in the first 2 seconds. So if you are just considering time from 0 to time is equal to 2 seconds, it is traveling a distance that is equal to x in first 2 seconds. Then it travels a distance x in the first 2 seconds and a distance y in the next 2 seconds and distance y in the next 2 seconds. So time when the value of time becomes equal to 4 seconds. Here our aim is to find out the next, if y is equal to n into x, then what is the value of n over here? So y is equal to n into x is given. So our aim is to find out what about the value of n. So first we can find out what about the value of x. Okay. So in the first situation which is given over here, we can write initial velocity is 0 and acceleration is nothing but a, and we know that displacement is equal to x, and we know that time is equal to 2. And in second case, I am taking from initial to final directly. Okay. So that initial velocity we can take it as 0, acceleration we can take it as a, time we can take it as 4, distance we can take it as x plus y. Is it clear? Yes, sir. Now our aim is to find out the value of distance, means x or y chahiye. So we'll go for equation s is equal to ut plus half at square.
So in the first case, displacement is x is equal to initial velocity is 0. 0. So 0 plus half into a into time is 2, that is 4. So we'll get x is equal to 2a. Take it as equation number 1. Yeah. Now if I'm using the same equation in second case, that is x plus y is equal to, we can take it as again ut plus half at square, half into a into t. T is 8a. 4, 16. So it is 8a. So x plus y is equal to nothing but 8a. So we can write what about Y the is equal to 6. relation? Yeah, the relation between them. So आप ऐसा x का value find out कर सकते हैं, and if we can put this value of x over here. So 2a plus y is equal to 8a. So y का value हो गया 6a. So basically our aim is to find out what is the value of n over here. So this n is basically y divided by x. So we got the value of y and the value of x. Y is nothing but 6a and x is nothing but 2a. So we'll get the value of n as 3. Got it? Sir, 12 also. Sir, 11 also. Yeah. Now it is going that a particle is moving in a straight line with initial velocity u and uniform acceleration a. If the sum of the distances traveled in the tth and t plus 1th second is 100 centimeter, then the velocity after t second is. Yeah, sir, मेरे को तो. So here it is given that a particle is moving in a straight line with the initial velocity u. So particle is starting with an initial velocity u and with the uniform acceleration, let's say a. The sum of distance traveled in the tth, मतलब n the second जैसा tth second. So distance traveled in the tth second, distance traveled in the tth second, and t plus 1 second is plus t plus 1th second, which is given as nothing but 100. So its velocity after t second is, our aim is to find out velocity after t seconds. So we know that distance traveled in the nth second is, we know the relation, distance traveled in nth second is u plus a into n minus half. So we can write distance traveled in tth second is u plus a into t minus half. So t minus half plus distance traveled in t plus 1 second is u plus a into t plus 1 minus half. Got it? T plus is equal to nothing but 100. So we can write this is u plus a into t minus half plus u into u plus a into t plus half. सर which is equal to 100. बोलो बेटा सर 1 मीटर लेना चाहिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए इसलिए. क्या लेना चाहिए? 1 मीटर लेना चाहिए ना 100 सेंटीमीटर की जगह. हाँ वो that we can do it because the answer में जो दिया है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है. ओके मीटर में नहीं पूछा है. You can convert बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं. ओके Now we can write this. अगर हम इसको ऐड करेगा u और u ऐड करके क्या होगा 2u हो जाएगा प्लस at and at ऐड करके 2at हो जाएगा, है ना, and minus a by 2 and plus a by 2 cancel हो जाएगा. This will be equal to 100. So we can write u plus at is equal to 100 divided 50. by 2, which is equal to 50. And we know that velocity is nothing but u plus at. So we'll get the value of v after a time of t second is nothing but 50 centimeter per second. Got it? Yes, sir. Sir, 12th also. Yeah.
12th one is going that a particle is moving with a uniform acceleration. Particle is moving with a uniform acceleration along a straight line ABC. Its velocity at A and B are 6 and 9 centimeter per second respectively. If AB is to BC is 5 is to 16, then the velocity at C is. So over here it is given that a particle is moving with uniform acceleration along a straight line ABC. The particle is moving along a straight line. Take it as point A, point B, and point C. Its velocity at A and B are, so over here velocity was 6 meter per second, and over here velocity is 9 meter per second respectively. And AB means distance between A and B, let's say it is 5, and B to C is 16, or they are in the ratio 5:16. Then its velocity at C is. So our aim is to find out what about the value of velocity over here. Let's say velocity is V. Now it is moving with a uniform acceleration, so acceleration is constant throughout this. So between A and B, suppose if we are applying the equation between point A and B, so we can write initial velocity is 6, final velocity is 9, acceleration is A, and displacement is 5. Like that, if you are applying the equation between B and C, initial velocity is 9, final velocity we need to find out, displacement is 16, and acceleration is A. So we can go for that equation, V square minus U square is equal to 2A. So if you are applying it for the first case, so it is 9 square minus 6 square is equal to 2 into A into, as we can take it as 5. Equation number 1. Second case, we can take it as it is V square minus 9 square is equal to 2 into A into 16. Equation number 2. So while solving these two, we can find out the value of V over here. Right? Sir, Follow it up. what is the question number? Question number, think 12. Sir, displacement will be 5x or something constant. सर 5k रहेगा ना, रेशियो में दिए 5k आएगा. अब 5k में लिखो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो एनीवे हम लोग इसको डिवाइड करेगा तो कैंसिल हो जाएगा. यस सर. Can write any value over here, 5k, 5x something, because अगर कुछ वैल्यू इधर लिखेगा वो वैल्यू इधर भी लिखेगा, ये दोनों अगर हमने इक्वेशन नंबर 1/2 कर रहे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी. Sir, answer is 15. क्या देख लो क्या. तो इसका क्या आएगा, 45 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू, अगर आप इसको डिवाइड करेगा तो 5 डिवाइडेड बाय 16 का रेंज पे है. So you can write v square minus 81 is equal to, ये हो जाएगा 9 into 16. So v square will be equal to 81 plus 144. समझा. तो ये क्या जाएगा, 225 हो जाएगा. तो v should be equal to under root of 225 or 15. Got it. Sir, level 2 classwork, third one. Yes sir, third one. लेवल 1 में और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? No sir. Sir, level 2 question number 2 also. लेवल 2, बोलो कौन सा क्वेश्चन है? 2. First also sir. First one. A person moves 30 meter north, 20 meter towards east, and finally 20 √2 meter southwest direction. The displacement of person from origin will be. So over here we should write it in vector form. तो ऑलरेडी हमने वेक्टर्स में डिस्कस किया था इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है. तो बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट आप उसको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा.
to assume that this is our like north south is along x and y axis. So let's say this is north, this is south, this is east, and this is west. So over here, a person moves 30 meter due north. So we can just consider that initially traveling 30 meter north. Then 20 meter towards east. 30 north पे हो गया, तो ऐसा हो गया. 30 north, then 20 towards east. And finally 30 route to southwest direction. Southwest means A direction में हो गया. And this is given as 30 route 2 in southwest direction. Southwest means they are not mentioned any angle, means exactly south or west का बीच में है, so this angle we can take it as 45. So we can resolve this vector into its components along x-axis and y-axis. So component of 30 along this direction is going to be 30 root 2 cos 45. Cos 45 is 1 by root 2. So this is going to be 30. And along this direction, again 30 root 2 cos 45, that is also equal to 30. So we can write now the total vector, total these things in vector form. First we are having a vector of 30 along j cap. Then we are having a vector of 20 along I cap. Then we are having a vector of minus 30 along j cap. Then we are having a vector of minus 30 along I cap. So this 30 j cap and minus 30 j cap get cancelled. 20 I cap minus 20 minus 30 j I cap will get us minus 10 I cap. So this will be our final vector. So 10 meter and minus I means along west. So 10 meter along west. So my Yes, sir. Yeah. Sir, बोलो. sir, पर बोलो अब question के according a person moves 30 meter north and then 20 meter east. तो 30 मीटर के बाद मतलब नॉर्थ के बाद उधर ईस्ट आएगा, फिर 30 पैरेलल होना चाहिए ना साउथ. yes, yes. हाँ ऐसा ही किया ना बेटा, ऐसा ही किया सर, मैंने पर represent. आपने नहीं किया वैसे. सर क्वेश्चन में दिया एंड देन, मतलब 30 मीटर. समझता हूँ, उतना तो समझता हूँ बेटा. if I am writing 30 I cap 30 j cap plus 20 I cap, तो 20 I cap ऐड किया ना उसमें. आप जो बोल रहे हैं मेरे को समझ में आया, बट ऐसा ड्रॉ करना का जरूरत नहीं है, ठीक है. मतलब आई गॉट व्हाट यू आर सेइंग इज, आपने ऐसा बोल रहे कि फर्स्ट आप ओरिजिन से 30 ऊपर जाओ, फिर वहां से 20 ईस्ट में जाओ, फिर वहां से आप 30 रूट 2 इस तरफ जाओ, ऐसा बोल रहे ना. हाँ ऐसा जरूरत नहीं है. मतलब ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर को हम लोग ऐड करना है, समझा. तो मैंने फर्स्ट वेक्टर को, ये जो फर्स्ट वेक्टर है मतलब जो 30 वाला वेक्टर है उसको मैंने ऐसा कंसिडर किया, एंड ए वाला वेक्टर उसको ऐसा कंसिडर किया. इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना. दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर सेम बिकॉज़ दे आर पैरेलल है. एंड ये जो वेक्टर है उसको मैंने इधर ड्रॉ किया है, तो भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं. फिर हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं. Got it? ओके. तो a प्लस a ऐड कर रहा है. अच्छा जरूरत नहीं कि हम लोग उसको मतलब ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ नहीं है. वेक्टर में है, if a vector is displaced parallel to itself it will remains equal to itself. कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको. ओके. सर जो 30 रूट 2 45 डिग्री कैसे आया? Because it is given in question that उसका डायरेक्शन दिया है, साउथ वेस्ट दिया है ना बेटा. साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट दिया मतलब साउथ और वेस्ट का बीच में. एग्जैक्टली बीच में होगा, मतलब एग्जैक्टली बीच में होगा. अगर एग्जैक्टली बीच में नहीं है तो दे विल गिव इट अस 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट और 60 डिग्री साउथ ऑफ नॉर्थ, ऐसा देगा. कुछ भी मेंशन नहीं किया तो एग्जैक्टली बीच में ही है, 45 डिग्री पे है. समझा? सर बोलो बेटा. और वो 30 रूट 2 जो साउथ वेस्ट गया था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने -30 जे कैप और 30 आई कैप लिया ना. हाँ उसको रिजॉल्व किया मैंने. ये वेक्टर को मतलब रिप्रेजेंटेशन करना इजी रहेगा ना.
इसको अगर x एक्सिस और y एक्सिस में रिजॉल्व करें तो 30√2 को मैंने रिजॉल्व किया तो इसका कंपोनेंट 30 आएगा, इसका भी कंपोनेंट 30 आएगा। ओके फिर तीनों वेक्टर को ऐड कर दिया, समझा? यस सर। और बोलो Third one. सेकंड वन। Second one also, sir. Okay. If a car covers 2/5 of total distance in V1 speed and 3/5 of distance in V2, then the average speed is. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, वो कंसेप्ट यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसमें क्या दिया कि एक कार कवर्स 2/5 ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद अ स्पीड v1। तो आप टोटल डिस्टेंस को कुछ s मान लो, ठीक है, जो भी डिस्टेंस मान लो s, मान लो a to b टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, एंड 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, 2/5 ऑफ s हो गया, ठीक है, ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ v1 एंड 3/3s/5 मतलब रिमेनिंग जो पार्ट है दिस ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ v2 हो गया, देन द एवरेज स्पीड इज। So we know that what is average velocity? Average velocity क्या था? Total displacement by total time. So we'll go for s1 plus s2 divided by t1 plus t2. Now s का value तो हमको पता है, which is s1 plus s2 is going to be s divided by t1 का value पता नहीं है. So from that equation, velocity is equal to displacement by time. We'll write time is displacement by velocity. So displacement in first situation is 2s divided by 5 by velocity that we can take it as v1 plus displacement in time in second situation is 3s divided by 5 by v2. Now we can take this s common and cancel कर सकते हैं, ये जो s को common लेके आप cancel कर दो। Now we can just rearrange this one. So this is 1 divided by, अगर आप 2 divided by 5 v1 plus 3 divided by 5 v2, या ऑप्शन में कैसे दिया है उसका उस हिसाब से इसको रीअरेंज करके लिख दो। ऑप्शन में क्या है कि ओके इसको इसका फॉर्म में दिया है, तो एक काम कर दो, आप इसको 5 ऊपर लिखा और v1 v2 को एलसीएम लिया, तो क्या आएगा 2v2 प्लस 3v1 एंड बाय v1 प्लस v2 आएगा, उसको ऊपर लिख v1 v2। समझा? यस सर। या यस सर। तो थर्ड में डाउट है। Yeah. It is given that 4 persons A, B, C, D initially at corners of a square of side D. Every person starts moving with a same speed v such that each one faces the other. The person will meet after. Okay. Actually, this question is related to relative velocity. अभी हम लोग इसका मतलब उधर तक आए नहीं है. We cannot solve it right now. Okay. सर बोलो बेटा। सर CUQ का 7th वाला पे डाउट है। CQ 7th, ये क्वेश्चन आप मार्क करके रखो, थर्ड वन, ये रिलेटिव वेलोसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? थर्ड वन CUQ 7th one, yeah, an object may have sorry 8th one, okay, the distance traveled by a particle in a straight line motion is directly proportional to t raised to 1/2, where t is time elapsed. What is the nature of motion is? So over here in question it is given that distance traveled by a particle, I'm just representing it by s, is directly proportional to t raised to 1/2. Then what is the nature of motion is? Nature of motion means we need to find out whether it's acceleration, मतलब acceleration motion है, retarded motion है, या मतलब constant velocity है, या acceleration 0 है, ऐसा, okay? Sir, what is time elapsed? Time taken. Okay. मतलब with respect to time. तो हमने already बोलो बेटा। level 2 question 11 question 5 sir.
हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट क्लास में, अगर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल है उसको आप हटा के इक्वल टू सिंबल लिख सकता है while putting a constant. So we can write s is equal to a constant k into t raised to 1 by 2. Okay, अब कोई भी एक symbol use कर सकता है. Now first we can find out velocity. For finding out velocity, we can differentiate displacement with respect to time. So k is a constant. t raised to 1 by 2 का differentiation क्या आएगा? हाफ t raised to 1 by 2 into t raised to minus 1 by 2. minus 1 by 2. 1 by 2 into t raised to minus 1 by 2 आ गया. So ये हो गया first मतलब velocity का value. Once again, if you are differentiating this equation with respect to time, we'll get the value of acceleration. So we can write this dv divided by dt. Got it? Yes. So if you are going for dv by dt, k by 2 is a constant. T raised to minus 1 by 2 का differentiation. बोलो क्या आएगा? minus 1 by 2 minus 1 by 2 t raised to 1. t raised to minus 3 minus 3 by 2. Okay, so over here you can observe that this will be equal to minus of k divided by 4 into t raised to minus 3 by 2, right? Yes. So over here you can observe that negative sign आ गया. That means this acceleration is it is going to be a retardation. Yes. So and now with respect to time क्या होता है वो भी आप देख सकता है. A is equal to minus of 1 divided by, I'm just writing this t on denominator, तो t raised to plus 1 3 by 2 आएगा. Yes. So time increase होते जाएगा तो t raised to 3 तो by 2 का decrease वैल्यू भी होगा. t raised to 3 by 2 का वैल्यू भी इंक्रीज होते जाएगा. Yes. तो पूरा तो decrease. पूरा का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा. Yes. तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वो कम हो रहा है. decreasing retardation. So decreasing retardation. समझ में बात? The 10th one. So decreasing acceleration ना. No. minus नेगेटिव आ गया ना, माइनस आया ना बेटा, तो डिसेलरेशन है. Okay. Sir, 10th one. ओके, कौन सा ये सी क्यू में की और Yeah, sir. CUQ. K by 4. How did you get minus k by 4 over there? डिफरेंशिएशन ऑफ ये k by 2 समझा कैसा है? Yeah. k by 2 into t raised to 1 by 2 का डिफरेंशिएशन. K by 2 into okay, got it. Yeah. इसको इस मल्टीप्लाई किया है ना. So I didn't understand the last step. ये पार्ट समझ में आया इधर तक, मतलब अप टू दिस पॉइंट. Still minus k raised to 4 समझ में आया. माइनस k by 4. हाँ वो पार्ट समझ में आया, उसके आगे वाला नहीं. इसमें आगे इसको जस्ट अरेंज करके लिखा है. दिस इज इक्वल टू माइनस k by 4 को एज इट इज मैंने लिखा. t raised to minus 3 by 2 था, उसको डिनोमिनेटर में लिखा 2 raised to 3 by 2 लिखा. समझा? Okay, yeah. नाउ हमको एक नेगेटिव साइन मिल रहा है, मतलब क्या, रिटार्डेशन हो गया. Yeah. नाउ अगर हमने टाइम इंक्रीज कर रहा है तो t raised to 3 by 2 बढ़ेगा. हाँ. तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल दिस वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज. Yes. Yes. So acceleration is negative and the magnitude of acceleration is decreasing. Yeah. तो negative Yeah. acceleration is decreasing. ऐसा हो गया ना. Okay, thank you, sir. Can you scroll up once? So can you scroll up? Yeah. Sure.
हो गया? सर बोलो बेटा। सर लेवल 2 क्वेश्चन 5 में आउट है। CQ में और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? सर 11th one. Sir, 11th one. When the speed of car is u, the minimum distance over which it can stop is s. If the speed becomes nu, what will be the minimum distance over which it can be stopped during the same time s? Okay. Minimum distance over which it can be stopped during the same time s. So the question का meaning है, when the speed of car is u, so we are applying some brake or retardation. Because of that, it is coming to rest. Velocity 0 हो गया, final velocity while traveling a distance s in a time of t seconds. Second case, we are increasing its velocity to nu, so it should come to rest in a same duration of time. Like इधर time t पे आ रहा है, इधर भी same time t पे आना चाहिए. So our aim is to find out how much distance it will travel. Take it as s dash when we are increasing the velocity. समझ में आया question? The speed of car was u, minimum distance over which it can stop is s. If the speed becomes nu, what will be the minimum distance over which it can be stopped during the same time? So over here, first situation, we know the initial velocity, which you can take it as u. Distance, you can take it as s. Acceleration, which is nothing but deceleration, you can take it as a. Final velocity, you can take it as 0. Time, you can take it as t. Now in second situation, you should take initial velocity as nu. Acceleration, you can take it as minus a. And distance, we can take it as something but s dash. Time, you can take it as something but t. Final velocity, you can take it as 0. So we need to observe which equation we should apply. कौन सा equation use करना है? S is equals to ut plus half at in both cases. Yeah. बोलो बेटा. How acceleration will be same in both the cases? On the assumption that we are exerting same force over there. 1 minute. But Even then like the speed becomes nu, what will be the minimum distance over which it can be stopped during the same time? What will be the minimum distance over which it can be stopped during the same time? Yeah, actually it's not, they are not mentioned about that the same time दिया है. तो आप acceleration को मतलब same नहीं किया तो भी चलेगा देखो, because they are not mentioned anything about this. Sir, level 2 classwork question number 4. Sir, how we will do this question further? हेलो सर, सर इसके आगे कैसे करेंगे?